સુનાવણી પૂર્ણ થઈ ગઈ છે। રખડતા કૂતરા મુદ્દે સુપ્રીમે મહત્વની ટિપ્પણી કરી છે કે આ ખૂબ જ ગંભીર સમસ્યા છે। જસ્ટિસ સંદીપ મહેતાએ બે ઘટનાઓનો ઉલ્લેખ કર્યો। રાજસ્થાન હાઈકોર્ટમાં બે જજ ભોગ બન્યાનો ઉલ્લેખ કર્યો। એક જજ હજુ સુધી સ્વસ્થ નથી થઈ શક્યા, તેમને કરોડરજ્જુમાં ગંભીર ઈજા થઈ છે। સરકારી વકીલ તુષાર મહેતાએ સુપ્રીમ કોર્ટમાં રજૂઆત કરી કે એનિમલ લવરની વાત થાય ત્યારે તમામ પ્રાણીઓની વાત થાય, માત્ર કૂતરા પૂરતી જ વાત કેમ સીમિત રાખવામાં આવે છે? કૂતરાને ઘરમાં રાખવો કે નહીં તે વ્યક્તિગત નિર્ણય છે। સોસાયટીમાં કૂતરા મુદ્દે બહુમતીથી નિર્ણય થાય અને જરૂર જણાય ત્યાં સોસાયટીમાં વોટિંગ કરી શકાય। 28 જુલાઈ 2025થી આ મુદ્દો સુપ્રીમ કોર્ટમાં ચાલે છે અને અત્યાર સુધી 5 વખત આ મુદ્દે સુનાવણી થઈ ચૂકી છે। कि काफ़ी सारे स्टेट्स ने उनको कंप्लाई नहीं किया है, काफ़ी सारे स्टेट्स ने उनको एफिडेविट अभी तक नहीं दिया है और उसके बाद उन्होंने बाकी सजेशन जो विक्टिम्स हैं उनसे भी लिए, बाकी जो और एनजीओ वाले हैं जो डॉग लवर्स हैं उनसे भी लिए। कोर्ट ने सबके अपने व्यू लिए हैं। 1000 के डॉग्स बाइट के केसेस हैं अथॉरिटी पार्क्स में, जो जिसमें बैन होना चाहिए, ना कि खाली स्ट्रीट डॉग खाली और पेट डॉग भी होना चाहिए। तो मैंने जो हाईलाइट किया मैटर, मैंने हाईलाइट किया कि थाउजेंड्स ऑफ केसेस जो बाइटिंग के हैं इन पार्किंग अथॉरिटी पार्किंग एरिया में, तो वो काफी बड़े स्तर पर है। जो रिसर्च है, सालों सालों की रिसर्च है, जो प्रूवन सॉल्यूशंस हैं, जो देश में ऑलरेडी ये इफेक्टिवली काम कर चुका है स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम, और जिससे डॉग की संख्या भी रिड्यूस हुई है, डॉग बाइट्स तो ऑलमोस्ट खत्म ही हो गई। वो तथ्य रखे गए आज कोर्ट के सामने और हम बहुत स्वागत करते हैं कोर्ट का कि कोर्ट ने ये चीज़ सुनी कि म्यूनिसिपैलिटीज़ का फेलियर है और साइंटिफिक तथ्यों को आज ऊपर रख के सुना गया।